हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करेंगे क्लास 12th का फिजिकल एजुकेशन। ये कंटेंट योगेश सर ने शेयर करा है बाय डॉक्टर मनुसूद। What is diabetes and asthma? Diabetes is a disease in which blood glucose or sugar levels are too high. Asthma is a common lung condition that causes occasional breathing difficulties. Asthma is caused by swelling, inflammation of breathing tubes that carry air in and out of the lungs. This makes the tubes highly sensitive, so they are temporarily narrow. Question number 2. Name two methods of strength development. The two methods of strength development are isometric exercise and isotonic exercise. Question number 3. Define motivation and personality. The word motivation has been derived from the word motive, which means aim or objective. According to Alderman, motivation is the general level of arousal to action in an individual according to Sage. The drive to strive is called motivation. The term personality is derived from the Latin word persona, meaning a mask. According to Sigmund Freud, personality is an individual unique thought, feeling, and behavioral thought persist over time and different situations. Question number 4. What do you understand by disability and disorder? According to WHO, disability is an umbrella term covering impairments of activity limitation and participation restrictions. An impairment is a problem in body function or structure. An activity limitation is a difficulty encountered by an individual in executing a task or action, while participation restriction is a problem experienced by an individual in involvement in life situations. Disorder can be defined as disruption caused by the normal functions of a person. Disorder hinder a person's performance and diminish his/her efficiency. Question number 5. What do you mean by aerobic capacity and anaerobic capacity? Aerobic capacity may be defined as the maximum volume of oxygen that can be utilized or consumed by the working muscles per minute. Anaerobic capacity means to perform activity without the use of oxygen to produce energy for that activity within the body and its resultant products, that is lactic acid, carbon dioxide, and water. Question number 6. What is coordinative ability and reaction ability? Coordinative abilities are those abilities which enable an individual to do various related activities accurately and efficiently. Reaction ability is the ability to react quickly and effectively to a signal. Question number 7. What is the full form of OCD and ADHD? The full form of OCD is Obsessive Compulsive Disorder. The full form of ADHD is Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Question number 8. What is incision and stress fracture? Incision are caused by a sharp cutting object such as broken glass. They are also caused when the impact causes the skin to be split over an underlying bone. A stress fracture is a small crack in a bone or severe bruising within a bone. Most stress fractures are caused by overuse of repetitive activity and are common in runners and athletes who participate in running sports such as soccer and basketball. Question number 9. Define endurance and name the two methods of endurance development. Endurance is the ability to sustain the necessary activity level for a specific competitive sport. According to Bauro Magli, endurance is the result of psychological capacity of individual to sustain movement over a period of time. The two methods of endurance development are continuous method and interval training. Section B, which consists of 3 marks. Question number 10. What are the different dimensions of personality? Write in brief about any two. Dimensions of personality. The following are the dimensions of personality: physical dimensions, intellectual dimension, mental dimension, social dimension, and emotional dimension. Physical dimension. Physical dimension include body size, shape, structure, color, appearance, weight, voice, and physical traits. Physical structure of an individual is related to heredity.
but few personality traits can be improved in proper environment. For instance, physical exercise, balanced diet, and other environmental factors improve physique, appearance, health, and posture of an individual. These dimensions refer to the qualities of the health, physique. If a person is tall, handsome, and healthy, he will naturally be impressive. His appearance will be attractive. In fact, a healthy body is necessary for all healthy personality. Physical appearance act as a first impression on the lookers. Intellectual dimension, mental dimension. Intellectual dimensions of personality includes memory, imagination, learning, thinking, reasoning, observing, judgment, attention, and perception. Intellect, intelligence and ability to make adjustment to various situations. Mental and intellectual capabilities of an individual help him in adjusting the new requirements and circumstances of life in a most appropriate way. Human beings have been bestowed with higher mental and intellectual abilities compared to the living organisms. Question number 11. What are the causes of OCD? Number 1. Biological factors. OCD symptoms can be sometimes get passed on from parent to children. This means the, the biological vulnerability to develop OCD may sometimes be inherited. ओसीडी मीन्स ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, या जिस तरीके से हम लोग बोलते हैं एडीएचडी, अटेंशन डिफिसिट हाइपर डिसऑर्डर, एक ही एक्टिविटी को कर रहा है. तो जब हम लोग फिजिकल एजुकेशन पढ़ते हैं तो उसमें कुछ ऐसे डिजीजेस के बारे में भी पढ़ते हैं. अब उसका रीजन जो है वो आपका पोस्चर गलत है उसकी वजह से हो सकता है, या साइकोलॉजिकल हो सकता है, या आपने जबरदस्ती का स्ट्रेस पाल लिया है. अब मॉडलिंग कर रहे हैं और उसमें आपने ये सोच लिया कि भैया हमको एक्स्ट्रा फिट रहना है, एक्स्ट्रा फिट रहना है, और उसमें आप क्या कर रहे हो, खाना ही नहीं खा रहे हो, अल्ट्रा मॉडल बन रहे हो, तो क्या हो जाएगा पूरा बॉडी पिचक जाएगा. आप देखो किसी भी न्यूयॉर्क की किसी मॉडल को देखो ऐसे, तो लगेगा कि जैसे लगता है कि वो किसी ये नाजी जर्मनी का जो कैंप होता था घेटोज, वहां से आई हुई है. ठीक है, तो उसने क्या कर रखा है, वो न्यूट्रिशन ही नहीं ले रही है. तो दिस हैपेंस. तो यहाँ पर हम ओसीडी की बात कर रहे हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. अब इसके सिम्टम्स क्या है, ये पेरेंट टू चिल्ड्रन में आ रहा है. दिस मीन्स ये जो है एक टाइप का बायोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी है, वल्नरेबल है. टू डेवलप ओसीडी में समटाइम्स बी इनहेरिटेड. A link between a certain type of infection caused by streptococcus bacteria, बैक्टीरिया के कारण से हो रहा है, streptococcus है, and OCD has been found. This infection is recurrent and untreated. It may lead to development of OCD and other disorders in children. आगे देखते हैं environmental factors. There are environmental stressors that can trigger OCD in people with a tendency toward developing the condition. Certain environmental factors जो है उसमें क्या है, abuse है, किसी तरीके से उसको कुछ ज्यादा ही पीड़ा पहुंच रही है. फिर क्या हुआ, चेंजेस इन लिविंग सिचुएशन. छोटा बच्चा है, वो रह रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, सब कुछ है उसका, अब उसको बिल्कुल नए परिवेश में लेकर के चले गए. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल चिड़चिड़ा सा. पेरेंट्स जो है वो अपना मन लगा लेते हैं, ऑफिस चले जाते हैं, दिस दैट काम में लगे हुए हैं, लेकिन उसका तो सारा कुछ हट गया ना. इलनेस, बीमार हो गए. फिर क्या है, डेथ ऑफ अ लवर्ड वन. यहाँ मतलब किसी से बहुत ज्यादा हम जुड़े हुए हैं, बहुत नजदीकी फील कर रहे हैं, और ऐसा कोई व्यक्ति जो है वो नहीं रहा, तो ऑब्वियसली ये एक मिजरेबल सा कंडीशन है. फिर क्या है, वर्क और स्कूल रिलेटेड चेंजेस और प्रॉब्लम्स. नॉर्मल देखो ना, जो टीचर्स के लाइफ है वहां भी बहुत सारा स्ट्रेस है. पेरेंट्स की सुननी है, बच्चों की सुननी है, अपनी सुननी है, अपने फैमिली वालों की सुननी है, बहुत सारा. फिर क्या है, रिलेशनशिप कंसर्न. ये आज की डेट में तो बहुत बड़ा सा चीज कहानी है. अब इसके बारे में मैं क्या बताऊंगा, आप लोग 12th में पढ़ते हो तो खुद ही समझते हो. अब हम बात कर रहे हैं फर्स्ट एड. तो सिंपल क्या है, टेक्निकली अगर कहा जाए तो कोई भी इंजरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो बिफोर द अराइवल ऑफ द डॉक्टर व्हाटसोएवर ट्रीटमेंट इज प्रोवाइडेड, व्हाटसोएवर ट्रीटमेंट इज गिवन, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट एड. First aid refers to the initial or first help that is given to an injured or ill person. The term was officially adopted in England for the first time in 1879 by St. John Ambulance Association. First aid does not mean medical aid, which is treatment by a doctor or other qualified person.
such as a nurse or ambulance officer. First aid begins with a person arrives at the scene of an accident and continues until the casualty recovers or medical aid arrives. तो जहां पे कोई इवेंट हो रहा है ऐसा जिसकी वजह से कुछ नेगेटिव उसका इम्पैक्ट है, तो वहां पर जो व्यक्ति आ रहा है और वो तब तक के लिए, जब तक कि एम्बुलेंस या कोई मेडिकल ऑफिसर नहीं आ जाते हैं, तब तक के लिए वो जो कुछ भी कर रहा है उसके बेटरमेंट के लिए ऑब्वियसली, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट एड. द मोस्ट ऑब्वियस ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट एड इज टू सेव लाइव्स. और टोटल जमा कुल जमा पर्पस क्या है कि ये व्यक्ति जो है ये मरे ना, इसकी लाइफ की सेफ्टी हो, जो कंडीशन है वो और वर्सन ना हो जाए. The person who gives treatment to the person suffering from a disease or an accident to improve his condition is called an aid, and the medical treatment is given as aid is called the first aid. Main aims and objective of the first aid are, सबसे पहला तो लाइफ को प्रिजर्व करो, दूसरा क्या करो, प्रोटेक्ट द अनकॉन्शियस. बहुत सारा इंजरी है, ट्रॉमा है, दिस दैट है, तो उसमें बेहोश हो रखा है. अब बेहोश हो रखा तो वो अपना किसी चीज का ख्याल नहीं रख पाता, तो उसका ख्याल रखा जाए. प्रिवेंट इंजरी और इलनेस टू बिकम वर्स, कंडीशन जो है वो और वर्सन ना हो जाए, इस चीज का ध्यान रखो. और टू डिक्रीज पेन एंड सफरिंग, पेन है, सफरिंग है, तो उस चीज को थोड़ा सा कम किया जाए. प्रमोट रिकवरी, उसकी रिकवरी जल्दी से हो जाए, इस चीज को देखा जाए. प्रोक्योर मेडिकल एड, और जो फर्स्ट एड प्रोवाइडर है वही बेसिकली एम्बुलेंस वगैरह को भी कॉल करता है, या बाय स्टैंडर्ड है उसकी मदद लेता है, या क्वालिफाइड मेडिकल असिस्टेंस को बुलाने में लगता है. तो ये सारा जो चीज है ये फर्स्ट एड के तहत ही आता है. अब फिर पूछ रहा विच आसन आर हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग ओबेसिटी. ओबेसिटी को रिड्यूस करने के लिए, मोटापा को कम करने के लिए कौन सा आसन है? Asanas which are helpful in reducing obesity are Vajrasana, Hastotasana, Trikonasana. Hastasana. To perform Hastasana, the following steps should be followed. Stand erect on the ground with both feet together. Inhale slowly and raise both arms over the head. With palms facing up, the interlock your fingers. Exhale and bend from the waist towards the right side. Maintain this position comfortably for 5 to 10 seconds. Inhale and come to the center. Repeat it from left to side as well. During hernia abdominal inflammation, these asanas should be avoided. Avoid this asana if you are suffering from severe back, neck, and shoulder pain. Question number 14. Differentiate between isometric and isotonic exercise. तो यहाँ पर हम आइसोमेट्रिक एंड आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस के बीच में डिफरेंस कर रहे हैं. पहला आइसोमेट्रिक, मूवमेंट्स ऑफ एक्सरसाइजिंग बॉडी पार्ट्स आर नॉट विजिबल टू थर्ड पर्सन. जो आइसोमेट्रिक है उसमें आपका जो पार्ट मूव कर रहा है वो थर्ड पर्सन को विजिबल नहीं है. आइसोटोनिक में मूवमेंट्स ऑफ एक्सरसाइजिंग बॉडी पार्ट्स आर विजिबल टू थर्ड पर्सन, दूसरा आदमी आपको देख पा रहा है. बेसिकली देखो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 पॉइंट लिखने हैं, लेकिन मैंने ज्यादा पॉइंट्स लिए हैं यहाँ पे. लेंथ ऑफ एक्सरसाइजिंग मसल्स डजंट चेंज. जो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है उसमें जो जिस पार्ट का एक्सरसाइज हो रहा है उसकी लंबाई में चेंजेस नहीं आते हैं. यहाँ आइसोटोनिक में क्या है कि उसमें एक्सरसाइजिंग मसल जो है उसका लेंथ में चेंज होता है. आइसोमेट्रिक वाले में क्या है कि मस्कुलर एंड्योरेंस वो डेवलप नहीं होता है. आइसोटोनिक में क्या है कि मस्कुलर एंड्योरेंस डेवलप करता है. These exercise can be performed at any place. आइसोमेट्रिक के साथ क्या कि आप उसको कहीं भी कर सकते हो. आइसोटोनिक के लिए क्या है, उसके लिए आपको स्पेसिफिक प्लेस चाहिए होगा, खुला जगह चाहिए होगा. These develop strength at one place. आइसोमेट्रिक जो है वो किसी एक जगह की मजबूती करता है, और ये आइसोटोनिक जो है दिस डेवलप यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ. इसमें यूनिफॉर्म तरीके से स्ट्रेंथ डेवलप होता है. आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस डेवलप स्ट्रेंथ एंड लेस फ्लेक्सिबिलिटी. वो स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए है, फ्लेक्सिबिलिटी से उसको कम मतलब है. आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस डेवलप स्ट्रेंथ अलॉन्ग विद फ्लेक्सिबिलिटी. इसमें स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों आता है. आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस क्रिएट बोर्डम. ये बोर्डम बोरियत क्रिएट करता है. आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस आर इंटरेस्टिंग बिकॉज दे आर सेल्फ टेस्टिंग. और ये जो है वो इंटरेस्टिंग है क्योंकि सेल्फ टेस्टिंग है. रिकवरी फ्रॉम मस्कुलर फैटिग इज स्लो. अब इसमें जो मस्कुलर फैटिग हुआ, थकान हुआ, उसकी रिकवरी स्लो है, और इसमें आइसोटोनिक में जो है वो फास्ट है. अब जैसे एक्सरसाइज बाय पुशिंग अ वॉल, आप क्या कर रहे हो, वॉल को धक्का दे रहे हो. और एक्सरसाइज विथ लाइट वेट्स, वहां आप उसको उठा रहे हो, हिला रहे हो, डुला रहे हो, तो दिख रहा है कि डोला बन रहा है या क्या हो रहा है.
चलो सेक्शन सी देखते हैं। एक्सप्लेन द टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन। भाई मोटिवेट करना तो बहुत जरूरी चीज है। मोटिवेटेड रहेगा व्यक्ति तो वो बहुत कुछ कर सकता है, आप उससे करवा सकते हो। तो मोटिवेशन इज द ड्राइविंग फोर्स विच इंक्रीजेस द डिजायर टू परफॉर्म बेटर। अब मोटिवेशन की वजह से क्या है कि आप बेटर परफॉर्म करते हो। देर आर वेरियस वे टू मोटिवेट अ पर्सन बट इट वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल बिकॉज ऑल द पर्सन आर नॉट द सेम। हर व्यक्ति को मोटिवेट करने का तरीका जो है अलग अलग है, क्योंकि हर व्यक्ति सेम नहीं है। दे कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स विद डिफरेंट एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर। लोग अलग अलग जगहों से आए हैं, अलग अलग बिहेवियर एटीट्यूड है। सो दे हैव टू डेल्ट विद वेरियस मेथड्स। तो इसलिए उनके साथ निपटने का तरीका भी अलग अलग होगा। फॉलोइंग टेक्निक्स कैन बी यूज्ड टू मोटिवेट एथलीट और पर्सन। पहला तो कॉग्निटिव अप्रोच, जो बुद्धिवादी तरीका है। कॉग्निटिव थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन रिलाई ऑन योर थॉट्स। बेसिकली थॉट प्रोसेस को मॉडिफाई करो। थॉट, बिलीफ, एटीट्यूड, सेंटिमेंट, इसको मोटिवेट करो। Cognitive motivation is believed to be rooted on two basic factors. The first factor involves information available to us. Initially, we will process the situation based on whether input is immediately available to our senses. जिसको मोटिवेट करना है उसको समझिए और वो किस कंटेक्स्ट में होगा उसको समझिए, और फिर ये देखिए कि हम जो कह रहे हैं वो उसके किस सेंस को असर डाल रहा है। हम लोग बोलते हैं ना कि 5 सेंस ऑर्गन है, तो उसको कैसे वो आप उसको मतलब इन्वाइग्रेट कर सकते हैं। द सेकेंड फैक्टर इन्वॉल्व्स आवर पास्ट एक्सपीरियंस। जो एनिक्डोट दीजिए उसको, पुराना कुछ कह रहे हैं और उससे वो मोटिवेट हो रहा है। which we refer when we try to make sense of information presently available and in determining how to respond or relate to current situation. Expectancy theory and goal setting theory are widely used as a cognitive approach for motivation. Expectancy theory explains why and how an individual chooses one behavior option over others. एक्सपेक्टेंसी थ्योरी बताता है कि भाई तुमने ये किया, ये ऐसा ही क्यों किया, अल्टरनेटिव थे तुम्हारा बट ये इसी टाइप का बिहेवियर क्यों हुआ। According to this theory, people are motivated for the task where the probability of success is higher in comparison to failure. तो लोग जो है ऐसा काम करने में ज्यादा विश्वास करते हैं जहाँ सक्सेस का चांस जो है ज्यादा है। The goal setting theory states the importance of creating goals in motivating a person. The important features of goal setting theory, पहला तो टाइम बाउंड है। The task should be time bound, कि काम होना है कितनी देर में होना है ये फिक्स करो। फिर डिग्री ऑफ कम्प्लेक्सिटी ऑफ टास्क, कि टास्क कम्प्लेक्स है या क्या है। हाँ, तो जो टास्क है वो ना बहुत ज्यादा कठिन होना चाहिए ना बहुत आसान होना चाहिए। स्पेसिफिसिटी ऑफ द टास्क, टास्क क्लियरली इंस्ट्रक्टेड होना चाहिए। डिफाइन पर्पस ऑफ टास्क, और टास्क का पर्पस आपको बताना चाहिए। फिर पेडागोजिकल अप्रोच है। पेडागोजी इज अ डिसिप्लिन दैट इन्वॉल्व्स द थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस ऑफ हाउ बेस्ट टू टीच। पेडागोजी जो है वो ये बताता है कि चीजों को बताएंगे कैसे। टीचिंग स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल इन गाइडिंग एंड मेंटेनिंग द डिजायर्ड बिहेवियर ऑफ एथलीट्स। अब जो एथलीट है तो भाई उसमें डिसिप्लिन तो लाना पड़ेगा, डेकोरम लाना पड़ेगा, तभी वो कर पाएगा। आप धूप में उसको खटा रहे हो, ठीक है, टेम्परेचर कितना भी है आप उसमें उसको खड़ा रहे हो और रिगरस से रिगरस प्रैक्टिस करवा रहे हो, तो उसका एक तरीका होगा ना। तो ट्रेनिंग प्रोसेस को एंजॉयबल और उसका जो डिसीजन मेकिंग वेयर स्टूडेंट्स आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन डिस्कवरिंग नॉलेज, वो आपके साथ काम कर रहा है और साथ में वो कुछ नया चीज सीखता जा रहा है। एथलीट्स आर हाईली मोटिवेटेड, अलाउड टू फाइंड सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स बाय देमसेल्फ रेदर देन इफ दे आर जस्ट मेड टू डू थिंग्स एज पर इंस्ट्रक्शन। तो बेसिकली कोई प्रॉब्लम है और उसमें जिसके साथ प्रॉब्लम है वो अगर करते करते उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखता है तो उसका क्या मतलब है, उसको सॉल्यूशन मिल रहा है, वो वहां पे मोटिवेट हो रहा है। और दूसरा, उसको वो चीज करने में आनंद आ रहा है। मतलब इंस्टीड गाइड कीजिए जो कुछ है, जहां पर कोई मान लीजिए डिस्क्रिपेंसी है, जहां पे कहीं भी अपहेवल्स हैं, तो गेट इट करेक्टेड, और वो भी राइट टाइम में एक प्रॉपर तरीके से, कि हर्ट भी ना हो और उसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम भी मिले। दूसरा क्या है, फन बेस्ड ट्रेनिंग, कि जो आप काम कर रहे हो उसमें एंजॉयमेंट भी आ रहा है, फन भी आ रहा है और वो काम भी हो रहा है। टू परफॉर्म एट द हाईएस्ट लेवल, ट्रेनिंग फॉर एथलीट शुड बी चैलेंजिंग एंड टास्क ओरिएंटेड. However, for providing athletes with enough drive and energy to sustain them for a long time, training methods should be fun and enjoyable. Creating a fun environment enhances enjoyment levels. और ये तो हर जगह काम करता है, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे और कोई भी सब्जेक्ट हो। जहां चीज में काम आपके लिए पनिशमेंट ना बन करके एक सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट बन जाए, तो आप थोड़ी ना थकोगे, आप तो उसको करते रहोगे। क्यों? क्योंकि हम लोग सब चाहते हैं कि एंजॉयमेंट वो मैक्सिमाइज हो। फिर क्या है, इंडिविजुअलाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम, आईटीपी, आईपी। ईच एथलीट इज यूनिक, हर स्टूडेंट, हर किसी कंटेक्स्ट में हर पर्सन जो है यूनिक है, तो हर एक के रिस्पॉन्सेज अलग हैं।
तो कुछ चीजें तो जो होंगी वो कॉमन होगी, लेकिन कहीं पर कुछ जगहों पे ऐसा होगा कि उसको इंडिविजुअल केयर देने की जरूरत है, तो वो कीजिए ताकि बर्नआउट ना हो जाए और व्यक्ति जो है वो मोटिवेटेड भी रहे। Third, social support strategy. Exercising and participating in sports is greatly influenced by the perception of people around the athletes. Positive social support from the peer group, family members, and friends in help in developing the healthy habits and enough drive to maintain the act of exercising. Societal support provided to athletes help him to start sustained sporting behavior. Initializing group activities and engagement of family and peers in sports participation helps in increase participation in sports and exercise. Goal setting. Goal setting is one of the most powerful techniques of motivation. The athlete should be very specific and clear about his goal. In other words, athlete should be very clear about he what he has to do and how he has to do. If if these three things are very clear in mind of the athlete, that then there will be no problem in motivation and one will do the things accordingly. One should be prepared mentally to do the activity and work to achieve the goal. The goal should not be impossible to achieve, it should be in reach of the individual. One should know the advantages of attaining the goal. Reinforcement. Reinforcement is the use of rewards and punishments that will work to either encourage or certain actions or decrease it in the future. There are two ways of using entry enforcement, a positive approach and a negative approach. The positive approach focuses on rewarding appropriate behavior. This increases the likelihood of his behavior, of this happening again. The negative approach focuses on the punishable, undesirable, and behaviors and should not lead to decrease these behaviors in futures. Most coaches and instructors combine positive and negative approaches. Sixth part, knowledge and progress of performance appraisals. These athletes should know fully about himself, his capacity, quality, and behavior, etc. Periodic positive results act as a strong motivational force. One should be made aware about his progress from time to time. Knowledge of progress is must because progress is also a reward in itself. Reward. They can be effective for further progress to achieve goals. This can be very effective to motivate the players. Various rewards and cash prize act as a strong motivational force to perform. Jobs. Outstanding sportsperson can be offered good jobs according to their achievement and educational qualification. There are various departments which provide jobs to a good sportsperson. That is police departments in various states, Indian Railways, banks, Air India, etc. Social awards. Government of India every year announces award for outstanding sports persons who bring laurel to the country in various games and sports. They are honored with Arjuna Awards, Padma Shri, Rajiv Gandhi Khel Ratna Award, Dronacharya Award, Major Dhyanchand Award, and Padma Hussain, etc. Some special awards are given to the for international achievements. Positive talks by teacher or coach is one of the best method to motivate an individual. It can help the athlete to change his thinking and behavior. Is the most important even if the and the athletes are at international level. At lower stages, it works as the most successful tool for motivation. To provide best quality equipment, the players are and athletes should be provided with the best possible equipment, which will help the athlete to avoid sport injuries. Best and easy practice without any tension in mind. Good quality equipment urges the participants to participate in activity, whereas an old and substandard equipment may turn off the interest of the individual. Question number 16. Contusion or dislocation are common sports injuries. Write in detail about symptoms and management of these injuries. Continuation. Contusion is a crushing of soft tissue by a violent external force without breaking continuity of skin. In severe cases, muscle became completely inactive. Athletes in all contact sports have many chances to get muscle contusion bruise.
Most conditions are minor and heal quickly without taking the athlete away from the game, but the severe condition can help cause disease tissue damage and can lead to complications that may keep the athlete out from the sports for months. Symptoms: swelling, pain, limitations of joint range in the motion near the injury, stiffness and weakness in the injured muscle. Management of contusion. Treatment steps. Contusion should be treated immediately with ice application for some duration. Apply cold compress for few hours. In case of swelling at place of contusion, anti-inflammatory medicine should be given. Dislocation. When two bones that come together to form a joint is separated, the joint is described as being dislocated. Contact sports such as football and basketball, as well as high impact sports and sports that can be result in excessive stretching or falling, cause the majority of dislocation. A dislocated joint is an emergency situation that requires a special medical treatment. The joints most likely to be dislocated are some of the hand joints. Aside from these joints, the joint most frequently dislocated is the shoulder. Dislocation of the knees, hips, and elbows are uncommon. It is an injury of joint in which adjoining bones are displaced from their original position. Dislocation is mainly caused due to direct or indirect impact over the joint. It may be simple dislocation, fracture dislocation, or complicated dislocation. Symptoms क्या है? Severe pain होगा, swelling होगा, inability to move the joint, and changing shape of the joint. तो अभी बस इतना ही करेंगे दोस्तों. Thank you. क्या हुआ? माता का फोन आ गया.